Dear students, once again I am in front of you to teach you certain topics about the salt. So today we will discussing about the yesterday we have started the teaching indicators. On the basis of indicators we can decide certain thing is acidic, basic or neutral, and even we can compare between the acidic strength and basic strength. So today on the basis of the pH we will be deciding the nature of the salt. Earlier already we have dealt with the salt. What is salt we have already explained. So today we will see what is salt here. So now, salts, how will you form the salt? To have a salt you need a base and acid. When you carry out the reaction between acid and base, you will get a salt. This reaction you already studied, neutralization reaction. During that we have taken so many examples to explain how the salts are formed when there is a reaction between base and acid. So when you see the salt, salt has got a positive ions as well as negative ions. Salt has got a positive ions as well as negative ions. These positive ions in the salt are known as cations and the negative ions are known as anions. So salt consists of two things, positive ions and negative ions. Now from where this cation comes and from where this anion comes, you always remember, cations or positive ions comes from the base. Positive ion or cation comes from base, whereas the negative ions or anions are coming from the acid. So when there is acid and base reacts with one another to form a salt, base provides cations, acid provides anions. Okay? So this is the case. Apart from this, the cations whatever available in the salt are known as basic radicals. These are the terminology you should remember. Basic radicals. Okay? So cations in the salt are known as basic radicals. In the salt, cations are known as basic radicals, whereas and it is coming from the metals. Only one example of cation is there in which there is no metal. That is ammonium ion. Ammonium ion is what? It is NH4 plus. Ammonium ion is NH4 plus. And this you can see here. This NH4 plus, no metals are there. Nitrogen, non-metal, hydrogen, non-metal. So there is no metal in it. But still it is a cation, it forms a salt. Okay? So it is made up. So another way we can define salt, that the salt are the substance. Salt are the substance which is formed when the hydrogen ion from an acid are replaced with metals. With metal ions or ammonium ions, then the salts are formed. So when the salts, if somebody asks you how to define the salt, then you will be saying that the salts are formed, or salt are the compound which is formed when the hydrogen ion in the acid are replaced with a metal ions or ammonium ions. Then we get a compound which is known as salt. मतलब क्या हुआ कि एसिड में जो होता है हाइड्रोजन आयन होता है, इस हाइड्रोजन आयन को, इस एसिड के हाइड्रोजन आयन को जब हम किसी मेटल से या अमोनियम आयन से रिप्लेस कर देते हैं तब ये हो जाता है सॉल्ट. जैसे H प्लस है, यहाँ ये मेटल आयन है, इसको रिप्लेस कर दिया, NaCl बन गया सॉल्ट. So you can define like that also, that salt are the compound which is formed when the hydrogen ion from any acid replaced with metal ions or ammonium ions. ठीक है? Then what the compound you will be getting, that is salt. Or in another way you can define. There are different way you can define. Another way you can write salt is a compound which on dissociation in water gives positive ions. Salt is a compound which on dissociation in water. Salt is a compound
which on dissociation in water. When you put salt into the water, it will undergo dissociation. When you put salt into the water, it will undergo dissociation and gives you the positive ion as well as negative ion. So it will give you the positive ion or negative ion, but it is not going to give you the hydrogen ion. Salt never gives you the hydrogen ion or hydroxyl ion. So salt are the compound which upon dissociation, the moment it gets dissolved into the water, it produces cations. It produces cations, that is basic radical, other than the hydrogen ion. That means all other cation can be produced except hydrogen ion. So no salt can produce hydrogen ion. No salt can produce OH minus ion. Salt always produce cations and anions, but the cations will be produced other than H plus ion. Anions will be produced other than OH minus ion. So this is the another way also you can define the salt. The salt is a compound which on dissociation in water adds positive ion other than the hydrogen ion or hydronium ion and the negative ion other than the hydroxyl ion. मतलब क्या होगा कि अगर कोई सॉल्ट है उसको पानी में घुलाते हैं, पानी में घुलने के बाद वो डिसोसिएट करता है और डिसोसिएट करने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज आयन देता है, मतलब केटायन देता है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन कभी नहीं देगा, H प्लस आयन कभी नहीं देगा। अदर देन हाइड्रोजन आयन वो और सारे केटायन देगा, लेकिन कभी भी हाइड्रोजन आयन जैसा केटायन नहीं देगा। उसी तरह से OH माइनस आयन जैसा एनायन वो कभी नहीं देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्ट एक कंपाउंड है जो पानी में घुलने के बाद डिसोसिएट होता है और वो केटायन एंड एनायन प्रोड्यूस करता है, और ये जो केटायन प्रोड्यूस होता है वो अदर देन हाइड्रोजन आयन होता है प्रोड्यूस, और ये जो एनायन प्रोड्यूस होता है वो अदर देन OH माइनस आयन प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे डिसोसिएट हुआ पानी में तो ये सोडियम आयन दिया, क्लोराइड आयन दिया, हाइड्रोजन आयन नहीं दिया, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दिया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट मतलब फैमिली में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं सिंह फैमिली है, यादव फैमिली है, झा है, मंडल फैमिली है, दास फैमिली है, गुप्ता फैमिली है, शर्मा फैमिली है, वर्मा फैमिली है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक टाइटल कॉमन होता है तो हमको उस फैमिली से बोल देते हैं, ये वर्मा फैमिली है, सिंह फैमिली है, यादव फैमिली है ना, सिन्हा फैमिली है, श्रीवास्तव फैमिली है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरह से सॉल्ट में भी देखते हैं कोई कॉमन चीज़ है तो उसके आधार पर हम फैमिली बना देते हैं। जैसे कि ये देखो सोडियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो ये हो गया क्लोराइड फैमिली। ये क्या हो गया? क्लोराइड सॉल्ट्स। अब इस दोनों में देखो सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, दोनों में कॉमन क्या है? सल्फेट है। ये हो गया सल्फेट फैमिली। अब यहाँ पर क्या है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट, दोनों में कॉमन क्या है? सोडियम है। ये हो गया सोडियम फैमिली। तो बहुत सारा सॉल्ट्स है, उसके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जो चीज़ कॉमन होगा उसके आधार पर वो फैमिली बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द pH और द नेचर, salts can be classified into 3 groups. Salts can be classified into 3 groups. First is the normal और neutral salt. न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? ये ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ये एकदम न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब एसिड में जितना भी H प्लस आयन है वो सब रिप्लेस हो जाए मेटल आयन से या अमोनियम आयन से। कोई भी एसिड में जितना भी H प्लस आयन रहेगा वो सारे के सारे अगर रिप्लेस हो जाता है मेटल आयन से या अमोनियम आयन से, तब जो है नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा। अनदर वे यू कैन सी, व्हेन द सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, व्हेन देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, when a strong acid and a strong base reacts with one another, then it will form a salt and water. So the salt when formed with the reaction of strong acid and strong base, then only it is
normal or neutral salt. Then only it is known as normal or neutral salt. Okay. Now, what do we say? Normal and neutral salt. So neutral salt is formed when the strong acid and a strong base reacts with one another. Just for example, you can take the example of sodium chloride. I take the example of sodium chloride. So this sodium is coming from sodium hydroxide and this Cl is coming from HCl. When there is a reaction between this sodium and this HCl, then it forms a NaCl and water. Okay, it is very stress rich. So sodium chloride is a neutral salt. How it is formed? So sodium is coming from sodium hydroxide, which is a strong base, and this chloride is coming from HCl, which is a strong acid. So there is a reaction between a strong base and a strong acid. That means cation and anion. A salt contains cation and anion. Both cation and anions are coming from a strong background. Means cations are coming from a strong base. Cations are coming from a strong base and anions are coming from a strong acid. Then the salt formed will be neutral because their pH is 7. जब strong acid और strong base में reaction होता है तब जो salt बनता है वो neutral होता है. नहीं, कोई भी neutral salt है इसका मतलब है कि strong acid और strong base में reaction हुआ है इसीलिए बना है. ठीक है. So now you can see here. So a strong acid and a strong base जब react करेगा तो neutral salt बनेगा. Okay. Now it is explained. Why? Because when a strong acid and strong base when reacts with one another, it forms a salt whose pH is 7. pH क्या होता है? Neutral salt 7 होता है, इसलिए उसको neutral salt बोलते हैं. Now I'll take the example of acidic salt here. Acidic salt, AlCl3. ठीक है? AlCl3. I'll take the example of AlCl3. AlCl3. This aluminium is coming from aluminium hydroxide and this Cl3 is coming from HCl. When these two reacts, it forms AlCl3 and water. So aluminium hydroxide is a weak base. Aluminium hydroxide is a weak base. Aluminium hydroxide is a weak base and hydrochloric acid is a strong acid. So here there is a reaction between weak base and a strong acid. तो जो strong रहेगा उसी का character आएगा. So what is this? Here HCl. It is a strong in nature. That's why AlCl3 is acidic. यानी जब weak base और strong acid में reaction होता है तो जो salt बनता है वो acidic होता है क्योंकि यहाँ पर acid जो है strong है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये salt बनता है तो इसका pH जो होता है 7 से कम होता है. pH 7 से कम होता है इसलिए ये सब के सब एसिडिक है. ये जो 3 एग्जांपल मैंने दिया है इसमें जो केटायन का पार्ट है वो वीक बेस से आया NH4Cl NH4OH से आया और जो Cl है या SO4 है ये दोनों जो है कहाँ से आया है? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया. इसलिए फाइनल कैरेक्टर क्या हो गया? एसिडिक हो गया क्योंकि इसका pH 7 से कम है. उसके बाद बेसिक सॉल्ट है दैट इज Na2CO3. That I'll see to it. Na2CO3. Now you can see Na2CO3. This sodium carbonate. Take the example Na2CO3. This Na is coming from NaOH and this CO3 is coming from H2CO3. So this is a base and this is a acid. H2CO3 is a carbonic acid which is a weak acid and this NaOH is a strong base. Sodium hydroxide is a strong base and this is a carbonic acid which is a weak acid and when it reacts it gives you the Na2CO3. So here sodium is coming from a strong base and carbonate is coming from weak acid. So which is a strong here? Base is strong. That's why the final character of this salt will be basic.
because pH is more than 7. When there is a reaction between strong base and weak acid, salt and water is formed, and the salt which is formed here are basic in nature because their pH is more than 7. So in this way we have understood what is this acidic, basic and neutral salt. We should remember this. How to understand? By looking at the molecular formula only we can understand, because molecular formula tells you that about the cation and anion, and with that cation and anion you can identify from where it is coming, and in this way you can identify it. Okay? Okay dear, have a nice day.